Oh, She's coming. 15 minutes. Okay. Okay. Meanwhile, if you have questions or you, let's recap, we can do that. Or we can even get started, whichever way. So last time, what all things we did? We performed all the remaining stuff with SEO. Right. SEO, the remaining stuff was being done off page and so forth. I had shown you Webmaster. Yes. Right. Webmaster. I had shown you some tools. Any tool was being shown. SEO Spider. SEO Spider. Right. SEO Spider was right. Screaming Frog. Right. Yes. Yeah. Right. उसे ट्राई किया था एक बार भी? हाँ सर ट्राई किया था. अच्छा. वही 2-3 वेबसाइट्स पे अलग-अलग पे वर्क करके देखा. अच्छा. Then we came to know कि हाँ ठीक है जैसे मैंने उसमें अच्छा हाँ right. It didn't work. Absolutely right. You started with that. Got it. What else? Then we started with pay-per-click advertising. Right. Or pay-per-click advertising में what all things we did? Recall that? Yeah, we did what kind of on what all networks I think. Absolutely, networks are there. There were 5 different networks. Was search. कौन से? Right. You want to refer your notes? You can. Yeah, I mean I remember. Yeah. And there was display. And there was mobile. Yes. And there was video. Right. Shopping. Right. और एक main तो रह गया क्या बोल चुके हो? Search. Search. सबसे पहले right. Search was the first one, right? And you understood the difference between all of them, right? What is the difference between search, display? So search was covered a bit in terms of doing the practical stuff. Also, we understood the account hierarchy, if you remember. The Google AdWords account hierarchy. याद है? नहीं याद. The hint of it, I think. अच्छा कोई नहीं. आ जाएगा याद. नहीं याद है? नहीं याद आता? Yes, yeah. अच्छा, I'll help you recall that. I said that there is always a hierarchy for a website. Hierarchy. Okay. Step by step. This thing? Sorry? Title? No. कोई बात नहीं. Okay, no, that was not the one. It's okay. याद आएगा. When I went to the AdWords account also, I told you the hierarchy, which is the level 1, level 2, level 3, level 4, they'll keep coming automatically. So level 1 came as the first option. It was your account only, na? I was. You were working on it, right? So, कुछ तो याद आया होगा. याद आया. Actually, मुझे वो mapping याद नहीं आ रही. Mapping याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं. But ये याद है कि mapping किया था. Because that is very important. कि ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे change कर सकते हैं. So there were few account settings. Account level number 1. Then campaign was level number 2. Ad groups. And then ads and keywords number level 4. याद नहीं है? Yeah. अच्छा. When we created the campaign, when we started working on AdWords, what was the first thing we did? I mean, we went to adwords.google.com. Right. We logged in there. In our account. Right. What were the questions which Google AdWords asked us? Do you remember that? So the currency पूछा था, currency पूछा था, time zone था, और website था. Right. So those were the account settings. I told you कि आज हम currency जो हम देंगे, वो कल हम change नहीं कर सकते. Right. So these things are very small, but needs to be known. Needs to be known from the perspective that whenever we will be working on them, these small little things can make a lot of difference. आज मैं currency कुछ और डाल दूँ और कल कुछ और डालना चाहूँ, that is not possible, right?
I also told you that I can give across access to access of my AdWords account to someone else. That's there in the account level only. And then when we started working, after putting across inputs in the account section, then the level 2 was the campaign section, if you remember. Yes. Right, We campaign. had to put the name of the campaign. Right. What else? Do you We remember? had to select which kind of network we are going to Right. use for the Right. AdWords section. Absolutely. Right. And then What all things? Campaign level number 2 है. campaign. Hmm. फिर budget था. Absolutely. Bid था. Right. And उसमें schedule भी कर सकते थे. Schedule भी कर सकते हैं. Absolutely. ये सारा campaign level पे है. Right. And we also understood that the bid amount which we put in and also the actual amount which we pay are two different things. Right. There was an example which we took last time. There were different examples. हमारा example था, right? And we understood how much do we pay in actual. So let's say today if I bid in across a certain amount, which is let's say $2, will I pay $2 only per click, or will I be paying lesser than that or higher than that? What was the formula? What was the overall rule through which we determine our actual cost per click? Total clicks? No. वो तो नीचे था. मैं बताता हूँ. एक हमारा था कि एडवर्टाइजर ए है, एडवर्टाइजर बी है, एडवर्टाइजर सी, एडवर्टाइजर डी है. तो हमारा बी से ₹1 अगर INR में तो ₹1 ऊपर होगा, और अगर डॉलर्स में करेंगे तो सेंट. Absolutely. So the actual amount which we pay is going to be ₹1 or 1 cent more than the second highest bidder after us. So वो जो हम bid करते हैं और जो हमारा actual cost per click होता है वो different होता है. So two different things, right? बहुत चीजें नहीं समझ में आई यार, because we have covered quite a lot, right? कोशिश कर रहे हो, हैं? आ रहा है कुछ समझ में? थोड़ा बहुत आ रहा है. अच्छा. Whatever we are working on right now, I'll just give you a brief before Mamta comes in. So we are working on Google AdWords. Google AdWords is one of the Google's product through which advertisers make advertisements. Advertisements अलग-अलग तरीके के होते हैं. जो हमने अभी तक थोड़ा सा किया है वो किया है सर्च एड किया है. अब कभी भी हम सर्च इंजन पे कुछ टाइप करते हैं, लेट्स से आप सर्च इंजन कब यूज करते हो? लेट मी आस्क यू दैट. आप सर्च इंजन कब यूज करते हो? कभी कुछ सर्च करना होता है, किस टाइप की चीजें सर्च करते हो इन योर डे टू डे लेट्स से जॉब? जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है. हाँ. और जैसे आपको ये कनेक्टर लेके आना था, मिनी DV2 लेट्स से ऑल दिस. अब आपने टाइप करा कि मिनी DV2 VGA कनेक्टर, ठीक है. आपको ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको ये लेके आना है, आपको कहीं से फेच करना है. आपने या तो बाहर मार्केट से पता किया या फिर आपने ऑनलाइन टाइप करा होगा, पता करा होगा कहाँ पे है, ठीक है ना. जब आपने ये अपनी क्वेरी डाली, आपकी जब भी क्वेरी है सर्च इंजन पे आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि सर्च इंजन मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दे. सर्च इंजन बना ही इसलिए, गूगल ने बनाया इसलिए. अब सर्च इंजन जो है फ्री का काम तो कर नहीं रहा, उसको भी कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए. तो वो पैसे जो लेता है वो ये एड, आप जो सिंबल देख रहे हो, ये एड और ये स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स, इसके थ्रू पैसा कमाता है, ठीक है. अब ये eBay, यहाँ पे Amazon है, eBay है, ये सारी वेबसाइट जो है, और इवन Amazon, दे आर पेइंग टू गूगल. और गूगल को कब पे करती है? जब पर क्लिक होता है. हर एक क्लिक पे देती है पैसे. हर क्लिक पे पैसा जाता है. Amazon की जेब से पैसा जाएगा, गूगल को जाएगा. और वो क्लिक कौन करेगा? क्लिक तो वो करेगा जो सर्च इंजन यूज कर रहा है. हमने जो अभी तक स्टार्ट किया है थोड़ा बहुत, वो हमने ये वाला एड क्रिएट करना स्टार्ट किया है. इसमें क्या क्या इसमें प्रोसीजर होते हैं, यहाँ पे तो हमें बहुत आसानी से दिख रहा है कि ये एड दिखता कैसे है. ये जो एप्पल वाला है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे एड सिंबल नहीं है. ये SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ये वाला प्रोसीजर हम पूरा कर चुके हैं. ये हमारा मॉड्यूल हमारा पूरा हो चुका है कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे ऊपर लेके आए बिना एड सिंबल वाले उसमें लिस्टिंग में. इन लिस्टिंग्स को, ये तो पेड लिस्टिंग कहलाती है, ये सर्च पेड लिस्टिंग कहलाती है. ये जो है ये अनपेड लिस्टिंग, ऑर्गेनिक या SEO लिस्टिंग, जो भी आप कह सकते हो, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू. तो वो हम सारा कवर कर चुके हैं कि क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, कैसे हम अपनी वेबसाइट को ऊपर लेके आ सकते हैं. अब मैंने तो बहुत ही आसान तरीके से 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे में बता दिया, ठीक है. लेकिन जब इसको काम एक्चुअल में करना होता है, पता नहीं कितने घंटे लग जाते हैं इसको वेबसाइट को ऊपर लाने, तेल निकल जाता है, ठीक है. सो it's all about working and practicing across. Till the time you won't practice, it will not come, for sure.
also watching a video actually on YouTube Mm-hmm. for the same thing, SEO purpose. No, that was for AdWords actually. Okay. So he just opened that Google AdWords section and then show that what's the ranking of different phrases. Even we can check the ranking of different phrases on what page it is, and then accordingly he selected one focus keyword kind of thing. I mean, for different phrases. Okay. And then he made few changes in that. Okay. Like it was something network service provider. Okay. So he said that network is actually not connecting to my specific work which I deal in. So he removed that network word from that specific phrase. And then he was he using some tool to check this keyword planner and all that? No. He was actually checking analytics part only. Okay. So then he showed that, okay, this is what I did, and after 7 days it was on second page, then he came up on first page. Okay, he did two things. But that was for Google ads, pay-per-click. Pay-per-click. Okay, pay-per-click में I have to cover that match type things. Today we will study. वो keywords के साथ जो खेलना जो बता रहे हो ना, वो आज हमने करना है. So कि अगर let's say 3 words है, 3 words का 2 words या 2 words का 3 words, आगे पीछे ऊपर नीचे वो सारा all सारा जो सारा खेल है, we do that. ठीक है, I forgot your name है, मैंने पूछा ही नहीं रहा था. इंद्रपाल. ठीक है इंद्रपाल, तो इसमें हमारी वेबसाइट जब ऊपर आती है तब ही हमें अब सबसे पहले तो हमें पता चलेगा कि सर्च इंजन में हम क्यों यूज करते हैं, गूगल कैसे पैसे कमाता है, और हम एज एन एडवर्टाइजर अगर एप्पल है या फिर Amazon है, we'll get our website either over here or over here. क्यों लाएंगे? क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट का उसकी सेल बढ़ानी है, राइट? Amazon के पास अगर इतने सारे प्रोडक्ट है, उसके पास मान लो मिनी USB टू VGA भी है, मिनी DV टू VGA है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. तो सारे प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए कहीं ना कहीं तो उसको प्रमोशन करेगा, ईमेल भेजेगा, सोशल मीडिया पे फेसबुक पे राइट साइड में एड्स डालेगा, और ऐसी सर्च इंजन पे तो ऐसे प्रमोशन होता है. सर्च इंजन पे अगर आपको अपनी ऑडियंस के सामने अपने प्रोडक्ट लेके आने हैं तो आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कैसे कैसे कीवर्ड्स पे, इन्हें कीवर्ड कहते हैं, किस कीवर्ड पे या सर्च क्वेरी पे आपकी ऑडियंस किस किस कीवर्ड्स को टाइप करती है. उसका कुछ टूल होता है, वो अब कर चुके हैं एक्चुअली, सारा गूगल का टूल होता है, उससे पता चल जाता है कि हमारी जो प्रोस्पेक्टिव ऑडियंस है, जो हमारे वेबसाइट पे आके बाय कर सकती है, जो मेरा ग्राहक बन सकती है, मैं वो क्या क्या टाइप करती है, पूरे 12 महीने के अंदर कितने टाइप कर चुकी है और कितनी बारी टाइप कर चुकी है, ये भी, और मेरे साथ कंपटीशन में कितनी वेबसाइट्स का, काफी सारी चीजें आ जाती हैं. वो हम सारा पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं कि पहले हम कैसे, हाउ डू वी रियली कम डाउन टू वन पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स. देन व्हेन वी हैव डिसाइडेड कि इन कीवर्ड्स पे हमें प्रमोशन करना है, so there are two ways, paid and unpaid. Unpaid is SEO, we have covered. And now paid में we are doing this text one, the text ad. Okay, the top one which is there, that's a shopping ad. वो shopping ad अभी हम नहीं कर रहे हैं. Text ad को we'll take it further. Last time we created this ad. अब इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या है, एक headline है. फिर ये headline पूरी है. उसके बाद एक URL है, website का URL है. फिर उसके बाद एक और text है. फिर उसके बाद ही कुछ और links हैं. और इसमें ये भी लिखा रहा है यू हैव विजिटेड Amazon 7 days ago. ये सारा कुछ हम कैसे लिखते हैं, क्या दिमाग में चीजें रखनी चाहिए जिससे हमारा जो एंड गोल है, हम कौन है, हम मार्केटर्स हैं, वी ऑल आर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग. व्हाई आर वी लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग? बिकॉज वी वांट एनी वेबसाइट व्हिच इज बीइंग गिवन टू अस टू बी प्रमोटेड. एनी वेबसाइट और एनी बिजनेस, अगर बिजनेस को प्रमोट करना है, बिजनेस में सेल लेके आनी है, बिजनेस में ब्रांडिंग करनी है, उसके लिए सबसे पहले तो वेबसाइट चाहिए. सिर्फ फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल वगैरह से कुछ नहीं होगा. वो बहुत, these are very small web presence. Web presence, a bigger web presence comes only with a website only. When you have a website, then you have to promote your website on various channels. Search engine पे आपने ऐसे start किया. अब इसको हमने एक part cover कर लिया कि how do we create this. Today we'll cover that keyword phrase, keyword match type which I'm talking about. Also we'll cover that ad extension. Last time we skipped that, right? Ad extensions जो मैं अगर कहता हूँ इंद्रपाल, ये जो चीजें है ना यहाँ पे, ये एड एक्सटेंशन होती है. जैसे नाम दे रहा है एड एक्सटेंशन, एड का एक्सटेंशन. जब भी हम एड बनाते हैं, एड की ना सिर्फ 3 या 4 चीजें होती हैं जो बाय डिफॉल्ट आती हैं. ये जैसे ये हेडलाइन हो गई, फिर उसके बाद ये URL हो गया, और उसके बाद ये टेक्स्ट हो गया. अब कभी भी हम कोई लैपटॉप लेते हैं, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस, कुछ वो प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ और डालने होते हैं तो वो एक्सटेंशन कहलाते हैं.
आपने इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाल दिया तो वो एक एक्सटेंशन हो गया। तो ऐसी ऐड का भी बाय डिफॉल्ट कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो हम कर चुके हैं, बट उसके बाद हमें कुछ उसमें और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी डालनी है। फोन भी हमने खरीदा है, फोन के अंदर कुछ ऑलरेडी एप्लीकेशंस आएंगी, बट उसके बाद मेरे को कुछ उसमें एक्सटेंड करना है एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, वो ऐड एक्सटेंशंस। नाउ द अदर थिंग इज एक्स्ट्रा फंक्शंस क्यों चाहिए फोन में या लैपटॉप में? एक्स्ट्रा फंक्शन क्यों चाहिए होते हैं? बिकॉज हमें यूज करना है, हमारे को यूटिलिटी चाहिए, वी वांट टू अचीव समथिंग आउट ऑफ इट, राइट? मेरे को अगर मैंने लैपटॉप लिया तो मैं सिर्फ 5-6 चीजें करके नहीं रखूंगा, मैं उसके 50 और चीजें जो मेरे को वो ऑफर करता है। सिमिलरली एड्स, जो गूगल एड्स है वो हमें ऑफर करता है कि आप ये एक्सटेंशंस कुछ डाल लो। 4-5 तरीके के एक्सटेंशंस हैं जो मैं बताऊंगा। उससे क्या होगा, आपके एड्स की जो वर्किंग है, जो उसका उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती है। वो क्यों है उसका भी मैंने एक लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था। लेट्स ट्राई अनदर कीवर्ड। एक ऐड बिना एक्सटेंशंस के, एक ऐड विद एक्सटेंशंस के दिखाता हूँ। ये बार बार क्यों हो रहा है? नो इनपुट इज डिटेक्टेड। आ गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इस वाले ऐड को देखोगे, ये सिर्फ 3 लाइन के अंदर खत्म हो रहा है, ठीक है। ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है। ये तीनों के तीनों ऐड 3 लाइंस में खत्म हो रहे हैं, ठीक है। अब 3 लाइन में खत्म हो रहे हैं मतलब तीनों बहुत थोड़े छोटे हैं एज कम्पेयर टू जो पहले वाला ऐड था। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5, 6, 7 लाइन्स आर देयर। अब कोई सा भी ऐड जो ज्यादा स्पेस घेर रहा है वो डेफिनेटली आपकी आंखों पे ज्यादा जल्दी आएगा, राइट? आई मीन यू विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन अ बिगर साइज ऐड रादर देन अ स्मॉलर साइज ऐड। तो जो ऐड ज्यादा रियल एस्टेट, ज्यादा स्पेस घेर रहा है, उसके चांसेस क्लिक होने के ज्यादा होते हैं। और हम एज अ मार्केटर यही चाहते हैं कि हमारा ऐड जो है, हमारा ऐड जो है ज्यादा से ज्यादा क्लिक हो। जितना ज्यादा क्लिक होगा उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारा वो प्रोडक्ट सेल आउट होगा। सिर्फ ऐड दिखाना इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव। ऐड क्रिएट करना, ऐड दिखाना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। कौन सी जगह पे दिखा रहे हो, मतलब कौन से कीवर्ड पे दिखा रहे हो और कब किस टाइम दिखा रहे हो, दे आर मल्टीपल थिंग्स और जिसमें आप प्ले अराउंड कर सकते हो। सो वी विल स्टार्ट विद दैट। Sumanta, you haven't missed much. We have just done the recap and we'll start now. Okay. All right, so just to give, I'll just change across the slides. Nitin. Who's that? Nitin. हाँ, Nitin. He asked me to remind you about some application form thing for the Google certification. Right. Absolutely, I'll show you that. Shall I show you that before? हाँ, ठीक है, पहले show कर देता हूँ. Yeah, just give me 1 second. I have to take this call. हाँ, connector में कुछ करना है. कर दे. हाँ यार, मेरे को पता नहीं था, मुझे पहले लगा शायद। रंजीता। इसमें है ना पर कितना एनर्जी है, क्या किया एक बार खाली एक दिन में टाइम मिला था, फिर वही ना डीएनएस वाला मैंने देखा, इसमें चार्ज इसमें नहीं पहले वाला उसमें दिख रहा है साफ एकदम क्लियर है, नो एरर। मेरा तो पता है वेबसाइट नहीं वर्क करना बंद कर दिया है, इसको नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, देखो स्किल कृतिका आज नहीं आई, कल आएगी। बोल दो, मैं तो तुमने बात करी, क्या दिक्कत हुई? दोस्त था।
मैं 4 days से पीछे पड़ा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। किस चीज का? So वही DNS, अब तो वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही है। अच्छा डीएनए का प्रॉब्लम हो रहा है डीएनएस का? अब तो ओपन ही नहीं हो रहा है। पहले तो डीएनएस चेंज तो नहीं किया ना आपने? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने टेक्निकली मुझे कुछ पता नहीं, तो कुछ किया भी नहीं। I don't know what happened. नितिन से बात किया आपने? 4 days हो गए, अभी तक कोई रिस्पांस आया नहीं इस चीज को लेकर। अच्छा आपकी वेबसाइट थोड़ी बहुत बनी हुई थी ना ऑलरेडी? I just started initial phase ही था उसका, अभी तो मैंने उसके नाम दिए थे, सोच रहा था कंटेंट क्या करूं, कीवर्ड एनालिसिस, प्लानर, ये सब यूज करके, ये सब मैंने मतलब किस टॉपिक पे कहाँ पे क्या वर्ड्स यूज करने, वो सब सोच के बनाना शुरू किया था। अच्छा लेट मी जस्ट टॉक टू नितिन। अभी हाथों हाथ ही फोन कर लेता हूँ। Yeah, webcache.googleusercontent.com. So I'm going on to adwords.google.com. बाकी ad बनाया था? Did you try making an ad after that? बनाया था आपने? अच्छा. So any difficulties and so forth? They were all stuff, same stuff, right? Okay. बल्क लोकेशन में एक्सेल शीट अपलोड कर देते हैं। उसमें ये होता है कि एक आप एक्सेल शीट लो, उसके अंदर सारी सिटीज, स्टेट्स और व्हाट यू से जिप कोड्स वगैरह सब डाल दो और वो इंपोर्ट कर देते हैं। वो बड़े एडवर्टाइजर्स के लिए फायदा है। When you are very much sure about that these are the multiple places which you want to go for. मैं अपना कैरेक्टर लगा लूं, है ना? So bulk location is based on that. There are multiple things which are related to bulk and so forth that comes in handy when you are a bigger what do you say advertiser like Amazon and all that people. ये 3,000 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। 3,000 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। This is for 3,000, that's for 500-600। ये 350 का है। अब ऐसे तो 150 650 में होते हैं। ऑनलाइन खरीदोगे तो 150 का मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में। नहीं अभी एप्पल का ओरिजिनल है ना, ये सालों साल चलेगा। इसका व्यू भी अच्छा है somehow. Not really sure. Okay, so very quickly I'll create a new ad. Okay, I'll just log into my other account. Did I tell you about two different accounts? One is the agency account, which is MCC account, and the other one is that, right? So I'm logging into my agency account. Do you guys want to run ads like for a few rupees and so forth? 200-400 रुपए का try करना चाहते हो? I can give you certain coupons. उसमें क्या होगा? I think you will spend, if you spend 500 to 1,000 rupees, Google will give you. So I can try if I can give you some coupon. So 500 की जगह 2,500 मिल जाएगा. Your spending would be 500, but total 2,500 worth of. I'm sorry. Practice point of view से फिर वही है, वहाँ पे डोमेन देना पड़ेगा। हाँ डोमेन अपना जो आपकी वेबसाइट है ऑलरेडी, that's what.
So I think that's a worthwhile investment of 500 rupees. At least it'll give you some idea that how ads are running, how numbers are coming in, and so forth. Okay, let me just get display. All right, so this is an MCC account. As you can see, last time I told you there are multiple AdWords account I have connected with it. मैं इस बार एक नया AdWords account इसमें connect कर रहा हूँ. I'm going to give it a name, KnowledgeWood, and this is, I started this batch on which date? February. When was our very first session? Do you remember that? 3 weeks back, na? February 18th, I believe. ऐसे कुछ था ना? Saturday. This will help me to recall. Saturday. 18th we started, right? All right. Okay, so as you can see, the overall initial things which were being asked at that point of time in your account, you know, the country, the time zone, and the currency, same things are being asked by me over here. I'm clicking on to create an account. I've created an account. So an individual account has been created, which is KW Feb 18th. अब मैं इस individual account के अंदर जा रहा हूँ. All right. So last time we clicked on to create your first campaign, right? We're going to be quick this time, and then we'll just do a recap. We did all features last time, and what was the campaign name which we created last time? Do you remember that? My KnowledgeWood की website का ले लेता example. That will make much more sense. So we're taking across an hypothetical situation where we have to promote across. I think that was the one. KnowledgeWood से लिया था मैं. KnowledgeWood से लिया था. So we'll take across the digital marketing course. All right. This is our landing page URL. The landing page URL is also called the destination URL and also the final page URL, right? So over here, all features, and these are the various networks which we saw, right? इसकी brightness बढ़ सकती है इनके projector की. Search network we selected. All right, so this is my campaign name. ठीक है, नहीं हो रहा तो forget it. Daytime brightness नहीं है इसमें. Brightness option. Aspect, mirror, reset. ठीक है, forget it. I thought जल्दी हो जाएगा तो ठीक है. कोई नहीं. So all features, the name of the campaign, search network, we understood search, display, shopping, video, and all these are there. And universal app campaign. We started with search network. Search network means your ad will be shown across in the search results. Then we understood what Google search partners are, which includes across all the web properties which Google owns, like Google Maps, Google Drive, and so forth. अगर हमें वहाँ पे ads दिखाना है. If we want that, so let this be checked in. Then I told you in terms of devices, our ad will be shown for all the devices for the search ad initially. Initially, we don't have that edit option. All right, edit options. थोड़ा सा वो नहीं हो रहा problem कि I'm speaking over here in this one, right? Last time it was both at one direction. Okay, मैं उधर आ जाऊँ. Shall I do it this way? Oh. I mean, if you guys are facing problem, I can judge. It's okay. ठीक है. Devices, we are initially not being given across the option from Google to select, but once we will run our ad, then Google will give us an option whether I want to run my ad only for mobile device, only for tablet, or only for a desktop device, or any two, or all the three. Locations we understood last time. Okay. Advanced search में आपको bulk options का
bulk locations का option आ रहा था, right? So bulk locations में okay, right? Either we type across all the bulk locations, यहाँ पे Excel sheet वाला option चला गया, okay. Okay, so 0 out of 1,000 locations, it's saying we can go ahead and straight away type in across all the locations one after another. That's it. That's the only thing. Radius targeting we understood and so forth. Location group is also very much like a bulk location part. The major one which we start with, we're gonna be doing radius targeting. Bubble I have selected. Okay, I'm zooming in further. Australia आ गया. इंडिया में पहुंचते हैं. इंडिया में हम दिल्ली के पास नोएडा सेक्टर 63 में पहुंचेंगे. मैं तो नहीं. और भी आएंगे सर? नहीं, बस ना सर. आपने सर और कुछ मंगा लिया इंजीनियर? हैं? नहीं कुछ नहीं यार. थैंक यू. ये अब हम पहुंच गए दिल्ली एंड देन A block, 63 H block. दैनिक जागरण ऑफिस आसपास ही है. Sure. Okay. थोड़ा और नीचे. दैनिक भास्कर. चलो ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. इसमें मैं कहीं पे भी प्लेस कर देता हूँ नियर बाय एरिया में. राइट साइड लोटस पार्क, टोटल BRS, एक्सिस बैंक, मदीना मस्जिद, फास्ट फूड शॉप, श्री गणेश. Forget it. We'll be just quick on this. लोटस पार्क ग्रेटर नोएडा आ गया तो हिंदुस्तान. बिरला सॉफ्ट ये रहा ना. बिरला सॉफ्ट तो पीछे है. हाँ, ये रहा बिरला सॉफ्ट और ये रेनॉल्ट ये रहा. ठीक है, just consider that we are somewhere over here. I'm just taking, so we know how to do this, right? मैंने ये बबल यहाँ पे प्लेस कर दिया. ये बबल लिया मैंने और इसको मैंने यहाँ पे बिरला सॉफ्ट का है. Let's say बिरला सॉफ्ट पे क्लिक करके मैंने डाल दिया. So बिरला सॉफ्ट को सेंटर ले लिया और बिरला सॉफ्ट के 20 माइल का रेडियस मैंने लिया. I can go ahead and change this and let's say I want only 5 kilometers radius to be taken. I'm adding this across. Now people who are residing within 5 kilometer radius of Bidla Soft will only get to see my ad and no one else, right? We're doing just a quick one. And the languages stuff we understood, we'll be doing only for English right now. Bid strategy is also something I have to talk about. Last time we understood that there are two major methods. One is the manual and the other one are the automated. The automated ones are here. Abhi humne understand nahi kiya. So we're starting with manual only. Default bid, I can put in across anything right now. Let's say it's 10 Indian rupees and my budget per day is 150 Indian rupees budget per day. Delivery method, do you guys remember what exactly we did last time? Standard and accelerated. क्या होगा standard में और accelerated में क्या फर्क है दोनों में? Accelerated में हमारा जो ad है वो जल्दी consume हो जाएगा. जो हमारा budget है वो जल्दी consume हो जाएगा. Standard में अगर if it's 150 rupees, so it will be divided across throughout the day, right? So we're starting with the delivery method. Now here comes in the ad extension. Let's try to understand each one of them. The first of all is the location extension. Let me show you the for overall view and ad extension. All of these ad extension looks like first of all. पहले दिखते कैसे हैं फिर उसके बाद understand करते हैं. Location extension जो होता है वो दिखता है.
Location extension, majorly it's used across for the mobile device. Something like this. So हमारा जो वो ad होगा, हमने ad last time create किया था, उसकी headline थी, उसका what do you say description था and so forth. But अगर हम location extension use करते हैं, तो it's going to come like this. The entire address of this place will come in. Location extensions are only used across by advertisers who have a physical location. So for our business, which is for KnowledgeWood, it makes sense because we are giving across physical, what do you say, services. People come in over here and then they take the training. Majorly for restaurants, for retail outlets, appearance and all that, for them make a lot of sense. So uske liye, for location extension, getting this location extension enabled, we always need to get our business registered with a Google's product, one of the Google's product that's called Google Business. Location extension enable करने के लिए Google Business पे पहले हमें अपना registration करना पड़ेगा. I think, did I show you this or not? Not at all? Okay. So when you get onto this Google Business, the very first thing we will get to see is create business account. Let's say I'm putting across a name as Test KW. So the moment you will log in into google.com/business, you will be getting across an option which says the name of the business. You put in across the name of the business. All right. Now it will say add a single location. So these are the steps which will come. जो पहले मेरे already थे वो मैंने already कभी create किए थे in the past. For you, it's going to be very much like this. This is the first screen which you'll get after that. So you'll put in across all your details. Let's say KnowledgeWood and all that stuff. Everything you'll put in across from your website. You'll take all the details. You'll take all the details like your business name, your contact us detail, which is primarily going to be your address. So once you will put in across your address, which is this, then Google, what it'll do, Google will actually go ahead and send in across a postal mail. A letter will be sent across to this address, 201301. So ये पहले actually हो चुका होगा already KnowledgeWood का. This is for sure. आपको तो पता होगा, कर रखा है किसी ने? हो गया होगा. Right? So once you do all this, once you put in across the phone, once you put in across, let's say category is another one, in which category your business is all into. Let's say I put in across training, and there are several training center. It's a training center. All right. And do you deliver goods and services to customers at your location? Yes, we provide services. So I'll put in across yes. So what I'm telling you, you put in across all your details. KnowledgeWood Consulting Private Limited. All right. Address is right over here. Phone number we automatically aa gaya. Then you will go ahead and click on to continue. Okay. Now it's also saying that marker location. So that bubble thing again. So you have to click on to set marker location and then take the bubble and place it at the right place where it is. Okay. So sab kuch ho jayega. Then you will go ahead and click on to done. Once that will be done, you will go ahead and click on to continue. Then Google will, like I said, send you a letter at this place just to confirm that yes, this person who is doing it, he can only enable this when he's residing at or when he owns this place or he's actually somewhat related to this organization. उसमें कुछ particular code आएगा, that confirmation code, like OTP thing. That OTP, then you will go ahead and log in again over here and then it will get confirmed. Once this will happen, then you will go back to your AdWords platform. AdWords में आप जाओगे, फिर location पे click करोगे yes, and then it will say your account doesn't have any location just because मेरा इस email address पे कोई मैंने अभी Google Business से location add नहीं किया है. But when you will be doing it, automatically it will show that KnowledgeWood is already connected to your Gmail account. Same Google account which you are using for Google AdWords, same Gmail account you have to use for Google Business also. All right. Then this location extension will get enabled.
You'll put that across, automatically it will get enabled, and when your ad would be shown in Google search result, the address of knowledge would come like this. All right. So location extension is like it comes in like this. We have understood the overall reason why these things are there. These ad extensions just for the purpose of improving the performance. And performance कैसे improve होती है? CTR click through rate बढ़ेगा. Click through rate तब बढ़ेगा जब clicks बढ़ेगा. For the same number of impressions, my ad would be clicked more number of times. Okay. So I took across an example last time. Let's say scenario 1, my ad is running without ad extension. Scenario 2, my ad is running with ad extensions. दोनों में हजार impression है. Without ad extension, let's say I get across 500 clicks. With ad extensions, I get across 700 clicks, 200 more. So usually you get more clicks. More clicks mean more click-through rate, which we understood last time. Click-through rate is one of the matrices through which we understand the performance. Click-through rate की formula क्या है? Do you remember that? Number of clicks upon number of impressions. Multiplied by 100. Absolutely right. All right. Now the next ad extension is site link. Now site link is nothing but it's the various other internal pages of your website which comes in. Now the way it looks like, काफी सारे मच्छर हैं. बहुत मच्छर. मेरे को पैर में बहुत काट लिए. इससे होगा नहीं है कुछ, but we can still try. खत्म भी है. ऐसे तो नहीं हाँ नहीं. ये मच्छरों ने मिला दिया है. ताकत है. मच्छर इसके ऊपर बैठे थे, मच्छर ने इसको काट लिया. Right. नहीं वैसे भी कर सकते हैं. वेरी गुड क्वेश्चन. वैसे भी कर सकते हैं अगर आपको उससे एसईओ में बिल्कुल डिफरेंटली फायदा होता है. यही मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको अलग से सिर्फ यूएस के लिए करना है, कनाडा के लिए करना है, दिस इज वन थिंग व्हिच यू शुड डू. If you are promoting across a website for any specific country, you should have Google Business enabled for sure. ये one of the off-page activities है. One of the off-page activities. Through this these site links and all that in SEO page also. site links absolutely they comes in that is called structured snippets basically. वो automatically Google से pick होते हैं. Sorry website से pick होते हैं. Google automatically लेता है. उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता. पहले होता था एक कोड डालना पड़ता था आपको वेबसाइट पे. That is called structured snippets. But as of now, today, if your website has got multiple pages, वो automatically आता है. और majorly वो जो आता है, वो आपके brand name पे आता है. Brand name related keyword पे. So let's say I type in across Amazon today. Amazon keyword है मेरा. Amazon तो brand name है. So ये वाले site links ही हैं. Site link extensions ही हैं, but ये unpaid में है. Ad नहीं है ना. So ये majorly आते तब है जब आपका what do you say brand name related keyword हो. Majorly तब आते हैं. Non-branded keywords in the sense अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ let's say by smartphone पे chances कम है. It's a generic keyword. See over here यहाँ पे तो खैर ऐड ही नहीं आया. So let's say alright, यहाँ पे भी ऐड नहीं आया. Strange. यहाँ पे भी ऐड नहीं आया. सैटरडे है इसलिए सैटरडे को ऐड नहीं चला रहे लोग. ये हो गया कि नाम ही काफी है. ये नाम के बिना भी खैर चला सकते हैं. या तो नोटबंदी का असर है. They're not running ads. All right. Okay, they're not coming. So all in all, what I'm trying to say, जो SEO में जो आते हैं, SEO में जो ad extensions आते हैं, site link extensions, sorry, वो usually आते हैं अपना branded keywords के लिए. Samsung मैंने डाला है. यहाँ पे तो ये तो paid के लिए हो गया. Unpaid में भी आ रहा है. Unpaid में भी actually internal pages आ रहे हैं. Okay, now coming back to those ad extensions, we have covered one of them, which is called location. Now, if you want to add another extension, that is called site link. Site link extension is like this only. Site link
extension is nothing but these are the internal pages of your website. Like this. Ad hai ye, this is an ad, and these are the internal pages. So we will be putting across information in AdWords in the extension section. What are the 4 different internal pages which we want to showcase? At the end of the day, you're not just promoting across one page through an ad, you're promoting 4 more pages. All right, you're giving more options. अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं frequently asked questions खुद बोल रहा हूँ और उनके आंसर भी खुद दे रहा हूँ. सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इनकी क्या अलग से कॉस्ट है या फिर ये फ्री है. Site link extensions are actually chargeable across the same per click funda, which is our main, what do you say, click also. जो topmost click है, यहाँ पे क्लिक करने पे पहले हमारा ऐड खुलता था, हमारे ऐड पे क्लिक करने पे लैंडिंग पेज खुलता था. Let's say I was giving across 10 rupees per click over there. Similarly, 10 rupees funda will be applied in for all the clicks which will happen over here. So pricing mechanism is same. Another question which comes across is that is it going to be the same page which will open up when somebody clicks on this or on this or on this or on this or on this? No, it's going to be all the 5 different web pages. 5 different web pages. It makes a lot of sense to provide 5 different web pages. Now, another question is what are those pages which are over here, which are connected with these 4? These all are internal pages of your website only. So let's try to see how will we create. Let's do an example where we create across a site link extension. Site link we have got over here, and I'll click on to plus new site link. At least 4 pages we have to insert across for sure. The very first, so I'll show again what I did. I clicked onto plus site link, okay? Plus new site link I clicked onto. Now link text is the very first thing which it's been asked. All right, I'm going to my website and seeing which are the internal pages. So let's say somebody who typed in, let's say digital marketing course, my ad came up. Okay, my ad for Knowledge Words came up. Now within digital marketing also, we are providing various other smaller, what do you say, courses also, like search engine optimization, Google AdWords, Facebook advertising, organic. So let's say इन 4 का हम साइट लिंक बना लेते हैं. मेन जो हमारा पेज का होगा, जो हमारे ऐड का होगा, वो डिजिटल मार्केटिंग होगा, but the other one is, let's say, search engine optimization. So this is the first site link which we can create. I've copied this URL of search engine optimization. I'm going to my AdWords right over here. Alright, so सबसे पहले link text, जो text linkable होगा, clickable होगा. It's 25 characters which you have to recall. 25 characters for the link text. SEO course. Let's say मैंने ये type करा है. Final URL is going to be the URL of my landing page, right? So just make sure ये HTTP 2 बार ही ना आए. Already उन्होंने दिया है. So I'm deleting that part. And it's asking, do you want to give across this extension preferably on mobile, or you are indifferent? So let's say mobile pe zyada preferred hai. I can do that. Now, description being the other element, 35 characters for this. As you saw for site link text was one thing, right? Over here, जैसे यहाँ पे Jordan shoes था, उसके अंदर text था, right? Similarly, हमने link text डाल दिया है और उसके बाद अंदर उसके description डालना है. So let's try type in search engine optimization course. All right. 35 and then another description I can type in. And so forth. Now, इसमें भी scheduling कर सकते हैं. The way we did across scheduling the other day for our entire campaign, we can do just specific scheduling for this site link ad extension also. I can type in what is the start date and the end date, and also a custom schedule, which would include that on which all days do I want my ad to run, on which all timing do I want my ad to run. Okay, all of these things can be done. Forget about the URL options, just so that's more advanced. Get this done. So one of your site link ad extension has been created. Similarly, you can create multiple of those. So let's create one more.
which is, so this was SEO. I can go ahead and create now this one for Google AdWords being the second one. So what will happen, all the four ad extensions which we type in over here, they will come in in my ads. Another thing which I want to let you know, not every time they will come. मैंने बना दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो आएगा ही आएगा. वो आएगा तब जब मेरा ad topmost position पे आएगा. If you remember, topmost on the first page. So Amazon का अगर यहाँ पे side link extension आ रहा है, तो वो फर्स्ट पेज पे टॉप फोर पे टॉप 4 में होनी चाहिए पोजीशन, तभी side link आएगा. Even though you have created, it might happen that it will not come. It will not come. Let's say अब ये जो ad नीचे आ रहे हैं, okay, नीचे इसमें कोई भी नहीं ad है, second page पे भी कोई ad नहीं है. Let's say there are advertisements on the first page bottom, तो वो वाला ad भी चला गया. See how dynamic is this? यहाँ पे ऊपर ad आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा. Okay. So first वाले ad के ad extension, side link ad extension आ रहे हैं. Second का भी आ सकता है. Second का, as you can see, location extension आ रहा है, right? और इसका location भी नहीं है. इस वाले का भी ad extensions आ रहा है. इसका थोड़ा अलग showcase कर रहा है. 1, 2 and 3. Now यहाँ पे सिर्फ 3 आ रहे हैं. इसने हो सकता है 4 बनाए हों. 4 minimum बनाने ही पड़ते हैं. On the advertiser side, minimum 4 has to be created. It's actually on the wish of Google whether they show either 0 or they show 2 or they show 3 or they show 4. Minimum 2 they can show, and then 3 also, and then 4 also. Or they can even decide not to show your ad at all. Sorry, your ad extensions. Now, as you will see, there are ad extensions over here also. Okay. In the first page, sorry, they are there, but in the second page, they don't come. Okay, in the second page, we have डाल दिया. Okay, this has changed. So I take back my words. This has changed, guys. Ad extensions यहाँ पे भी आ रहे हैं. पहले it was not there, so let me just search. Maybe they must have not put their side links somewhere. पहले ऐसे ही था. पहले यही था कि side link extensions, even if you put down, it will only be shown when your ad was there in the first page. In the first page, topmost position. But अब उन्होंने bottom का second page, third page पे भी कर दिया. So if I type in our side link extensions limited only to first page ads, and I'll just look for that. So यहाँ पे आपको काफी कुछ मिल जाएगा इसके बारे में. So Google also gives across a lot of information about these. Okay, I'll read about this later on, but I hope you have understood that these ad extensions, side link extensions, are the internal pages of your website. So I have gone ahead and created for the AdWords. I want it on mobile, and alright, so a couple of side link extensions have been created. We saw how do we put in across the link text and how do we put in across the description underneath. Now, as you can see, select at least 4. So 4 minimum has to be created. क्वालिटी स्कोर का फंडा होता है जिसकी वजह से पहले होता था. अब ये कि मतलब अगर आपको क्वालिटी स्कोर अच्छा है और आपका एड जो है ऊपर आ रहा है तभी साइड लिंक एक्सटेंशन शो करता था. बट आई कैन सी नाउ इट्स ऑलरेडी देयर फॉर द अदर आल्सो. सो आई विल जस्ट चेक फॉर दैट. Alright, now the per click funda, the per click pricing I have told you, it's the same per click price which you pay for your main click, which similarly you're paying over here on per click also in site link.
Now location site link, the other one is call extension. Now with call extension, you just need across only a phone number to be entered. Okay, the way it is seen across, the way it comes across is, right, you must have seen all this kind of an ad with the call button. On a mobile phone, it comes very much. Let me just try with a mobile phone. अभी आज कोई ऐड ही नहीं चला रहा है. So there is this one ad which does have the call button right next to it. Yeah. It's the same thing basically. All right, the moment you will click onto this, they usually come across on a mobile device. Mobile device पे ऐसे show करता है. अगर मैं call extension on a what do you say laptop करूँगा तो laptop पे call button नहीं आएगा, उस पे सिर्फ phone number आ जाएगा. Laptop पे phone number नजर आता है. On a desktop. Right? Desktop पे phone number ऐसे लिखा हुआ नजर आ जाएगा और उस पे call button नजर आएगा. ठीक है? Now let's try to put in across a phone number. अच्छा, यहाँ से